economic growth creates inclusive growth. Economic growth creates inclusive growth in the following ways. देखिए, upper you can create a diagram. Productivity, income, savings and human capital. इस चीज को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं virtuous cycle of growth, virtuous cycle of economic growth, virtuous cycle of economic growth. Income, productivity, income, saving, human capital. So it actually goes like this. ऐसे. This is the first point. अब इसका मतलब क्या है? Let me briefly explain it. देखो, हमें क्या बताना? इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स इंक्लूसिव ग्रोथ. तो कैसे होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ में वी फोकस मोर ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी. हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम यील्ड हो, तो कॉस्ट कम हो, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट. दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. नॉट कंसर्न्ड अबाउट सोशल जस्टिस, नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग एल्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स या जो भी है, हेल्थ, एजुकेशन. हमें क्या चाहिए? मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम रिटर्न. दैट इज प्रोडक्ट, हाई प्रोडक्टिविटी. जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा किसी भी कंपनी का, इट but natural would generate a lot of income for the society. Income generation होगा. Now that income generation can be equal as well as unequal. Inequality भी हो सकती है. So we are not yet concerned about that. वो हम बताएंगे जब economic growth will create inequality. That would be second part of the answer. But यहाँ पर we are saying that productivity will lead to higher income. अब जैसे लोगों का income ज्यादा होगा, they will try to save more. इकोनॉमी में सेविंग्स ज्यादा होगी एंड सेविंग्स देन टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट. आप वो सेविंग कहाँ पे लगा सकते हो? फॉर एग्जांपल, आई अर्न 40,000 रुपीज एज एन इनकम, जिसमें से 30,000 रुपीज इज माई एक्सपेंडिचर, माई रेंट, माई क्लोथिंग, माई फीस, एटसेट्रा एटसेट्रा, माई ट्रांसपोर्टेशन. 10,000 मेरा सेविंग है. ये सेविंग करते 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 द लेटर पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस इज द मनी दैट आई इन्वेस्ट इन education. This is the money that I invest in the health of my children, the health of my family. This is the money I invest in the education of my children. तो यही पैसा, सेविंग का ही पैसा फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जाता है. अब जैसे ही आपका एजुकेशन में पैसा गया, you have literate population in the country, you have healthy population in the country, it would further increase the productivity, it would further increase the income. तो this is known as virtuous cycle. ठीक है ना? तो इकोनॉमिक ग्रोथ से ये चीज हो सकती है, but it is not sufficient. ठीक है ना? लेकिन it would create a sort of inclusive growth by getting the economy into this virtuous cycle. I know. Employment intensive sectors increase livelihood opportunities for the poor. Formal sector employment enables a virtuous cycle of economic growth. Second point. अब economic growth हो रहा है इंडिया में. Inclusive नहीं हो रहा, economic growth हो रहा है. Economic growth would be like Reliance is growing, Tata is growing, these big corporations are growing. But बाकी population grow करे नहीं करे, we're not concerned about that. We just want that GDP should rise. Or rise in GDP can be only if one company is increasing the production, तब भी GDP बढ़ेगा. This is the domestic territory of India. अगर बाकी के सारे लोग is producing the same commodity, but one company is producing a higher production, so we can say the GDP is increasing. So GDP में जो main problem है, that is GDP does not show the uniformity of income. Uniformity in the sense कौन कितना produce कर रहा है, ये GDP नहीं दिखाता. Now GDP आपका economic growth is your growth across these, let's suppose these companies. अब जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो कर रही है, this 20%, this top elite portion of the economy, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? These companies when they grow, these companies are actually a big source of income for the government. So it will actually create resources for the government. तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन के जरिए काफी ज्यादा रिसोर्स मिलेगा as and when these companies start producing, चाहे जीएसटी के जरिए हो, एक्साइज के जरिए हो, कस्टम के जरिए हो, या इनकम टैक्स के, कॉर्पोरेशन टैक्स के जरिए हो, you can earn a lot of money. Now that money the government can use for health, for education, etc., etc. So this is only possible when you have economic growth. Economic growth nahi hoga, then this is not possible. This is what Jagdish Bhagwati has been saying. Jagdish Bhagwati, Amartya Sen ka, they have been always in this loggerhead with each other. Jahan par he is a very staunch critique of Amartya Sen, Jagdish Bhagwati, very leading economist of India.
वो कहते रहते थे लाइक जो कांग्रेस के टाइम का जो ग्रोथ कम था इंडिया में, द मेन रीजन फॉर दैट वाज अमर्त्य सेन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन ही बिलीव्स इन कैपेबिलिटी अप्रोच। वो कहते हैं कि यू डोंट नीड टू फोकस ऑन ग्रोथ, यू जस्ट फोकस ऑन द ह्यूमन कैपेबिलिटी, उसको बढ़ाओ, एजुकेशन पे पैसा लगाओ, हेल्थ पे पैसा लगाओ, पॉवर्टी खत्म करो, इकोनॉमी में ओवरऑल प्रोग्रेस हो जाएगा। वी डोंट नीड टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। पर जगदीश भगवती कहते हैं, साइटिंग दिस एग्जाम्पल, दैट पैसा तो आप तब लगाओगे पॉवर्टी पर, पैसा तो आप तब लगाओगे जब आप पैसा कमाओगे, और पैसा नहीं कमाया जा सकता अनलेस यू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ही टेल्स ही हैज अ ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, जो हमारा गुजरात मॉडल है इन अदर वर्ड्स, जहां पर यू फोकस ऑन ग्रोथ, क्रिएट सरप्लस फ्रॉम देयर, यूज दैट सरप्लस टू फोकस ऑन अदर वल्नरेबल सेक्टर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गिरानी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है, ये सारा गवर्नमेंट कर सकती है ओनली एंड ओनली व्हेन दे हैव टेकन दिस रिसोर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ। राइट डाउन। It improves the state capacity for welfare through more fiscal resources that can be used for health, education, and other parameters of development. उसके बाद we can also write down, second point हो गया. Third point is female empowerment. Economic growth से female empowerment भी आएगा. So that is also inclusive. ये भी एक तरीके का इंक्लूसिव ग्रोथ है. फीमेल एम्पावरमेंट कैसे? बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द फीमेल्स, फॉर एग्जांपल इन आईटी, टेक्सटाइल एटसेट्रा. नंबर 4, इकोनॉमिक ग्रोथ एड्रेसेस सोशल disabilities. This is India. This is a part of India which is urban India, ये rural India. Now economic growth, let's assume India में growth हो रहा है majorly concentrated in urban area, और urban area में जब growth हो रहा है, that is why we have the migration from rural area to urban area leading to urbanization. अब urbanization हो रहा है and now you have all these people coming to Delhi for jobs, for employment opportunities. So Delhi में आपका economic consideration है that you would want to give them job because this is a very cheap labor cost. तो बिहार से अगर कोई आ रहा है, you don't ask them आप यादव है, आप कौन सा है, आपका कास्ट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है. We don't ask them anything. We have a pure economic consideration. बिहार से कोई लेबर आएगा, it's a cheap labor, so we would use them. ठीक है ना? So urbanization में जब होता है तो people that come to these urban centers, they are not discriminated against on the basis of their caste and religion. Why? Because it is an urban center purely focused on profit making and does not take urban, these social disabilities into consideration कि आपकी caste और आपका background क्या है. So that is why, because of urbanization, because of economic consideration, it would treat these social disabilities, ये जो discrimination होता है against these people. और इसमें purely क्योंकि anonymity का भी concept है, somebody is coming from Bihar to Delhi, you don't know उसका background क्या है. ये तो बिहार में होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं जहां पर रहता हूँ, पीपल नो मी देयर एंड दे कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मी बिकॉज दे नो माई बैकग्राउंड. बट नाउ आई एम इन दिल्ली, you guys don't know me, तो you cannot discriminate against me. Why? Because you don't have my background. तो मैं कहाँ से हूँ, मेरा कास्ट क्या है, मेरा क्या है. There is a relative anonymity कहते हैं इसको. Urbanization की वजह से there is relative anonymity, because rural area में everybody knows you and urban area में there is a relative anonymity. ज्यादा लोग नहीं जानते, उस वजह से discrimination कम हो जाता है. So this would help us in overcoming these social disabilities. Write down. Economic growth leads to urbanization, which overcomes traditional social disabilities of caste and gender. For example, relative anonymity and economic considerations make it difficult to exclude. Okay?